we have completed about, we have talked about relationship, we have talked about health, we have talked about work and career, we have talked about money, and today we are going to uh, take it a notch above, from whatever we are doing. एक notch ऊपर लेके जा रहे हैं about money. So in the last chapter, when we did the, about money, the gratitude for money when we did, उसमें हमने क्या किया था? We did gratitude for the past. हमने पास्ट के बहुत सारे कर्जे देने हैं ना, हमने कभी किया ही नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था that we are supposed to pay gratitude for what we get, right? Or what we have. We never knew that. किसी ने सिखाया नहीं. No school taught us. Neither our parents, drilled into us. But now when we are reading this book, we are understanding how important it is to have gratitude in your life. The more gratitude you have in your life, the more abundance you attract in your life. So we are learning how to incorporate, how to imbibe, how to make it part of your daily routine, कि आप किस तरह से gratitude को अपने daily routine का एक हिस्सा बना पाए, right? So last chapter when we did, I think there was a break of 1 week because I was traveling. So we talked about the magical ingredient. कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम पानी पीते हैं, if we add gratitude's magical ingredient, तो वो कहते हैं ना, जैसे magical चीज कोई डाल देते हैं तो वो अमृत बन जाता है. So similarly, when we are paying gratitude to food and water, or whatever we are eating and drinking, its properties changes, because water has, this property that it absorbs. और हमारे food में, हमारे पानी में, हमारी हर चीज में जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो हमारा घर है, everywhere water has been used. So water and food, that is what we covered in the last chapter. How to incorporate gratitude in our daily life by paying gratitude to the food and water. And we also talked about how many people are involved in a single piece of vegetable or a fruit coming to our table. And हमने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं. हम तो बस सेब उठाते हैं, धोते हैं और खा लेते हैं, बोलते हैं an apple a day keeps a doctor away. बड़े खुश हो जाते हैं. But we don't even pay a second to think about it. How was it grown? Who all were involved? How was it, picked, transported, and how it has reached our table? So many people have been involved. So that is another opportunity that we can pay gratitude to all of them when we are eating a single piece of apple. Similarly for vegetables. और फिर हमने ये भी बात किया था कि it is the feelings which matters. माँ के खाने में स्वाद क्यों होता है? क्यों माँ उसमें प्यार डालती है. When she's cooking, that feeling of love comes in that food. That is why that food is so delicious and so healthy for us. इसीलिए अगर हम कहीं बाहर भी खाते हैं या कहीं और भी बनाता है हमारा खाना, how to purify that food. दृष्टा भाव से उसको देख के, being an observant, look at it and sprinkle gratitude's magic dust over it to purify it before eating it. Since I was traveling, and I was traveling to Kerala, and I'm a vegetarian, and it was a big issue for me to, get the kind of food I eat. बहुत मुश्किल होती vegetarians के लिए, and whatever food I was getting, I was mentally and, wherever I was getting opportunity, physically purifying it before eating it. So you all can do that. So that was the last chapter. So today we are going to talk about how to become a magnet to money. पैसा सबको चाहिए ना. पैसे से सब कुछ नहीं होता है, पर कुछ भी पैसे के बिना नहीं होता है. Yeah. So पैसा is important. We all know, we have come a long way in our life and we know how important money is. तो आज हमने ये सीखना है कि हम मनी के मैग्नेट कैसे बन सकते हैं. Magnet,
चुंबकीय शक्ति अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, ये पैसा हमारे पास खुद ही खिंचता चला है, इट जस्ट कम्स टू यू। अगर हमें वैसे मैग्नेट बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमने लास्ट चैप्टर जो मनी का किया था उसमें हमने अपने पुराने, आई थिंक हमने काफी सारे कर्जे अपने उतार दिए, क्योंकि अगर इफ यू सी व्हेन यू हैव मनी, आप अपने, जब तक सबके कर्जे नहीं उतार सकते तब तक आप अपना सेव नहीं कर सकते हो पैसा, उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि इसका देना है उसका देना है, तो पहले कर्जे उतारे जाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसके बाद पैसे को सेव किया जाता है। सिमिलरली हमने पिछले चैप्टर में जो मनी का चैप्टर किया उसमें हमने अपने पुराने कर्जे उतारे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है ग्रेटिट्यूड्स का, जो हमने दिया ही नहीं है। So what we did in the last chapter was we went down memory lane from the time we were born till the time we started earning money. हमने पैसा अपने आप कमाना शुरू किया, तब तक हमारी सारी जरूरतें जिसने पूरी की, चाहे वो हमारे पेरेंट्स थे, चाहे वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, चाहे वो हमारे अंकल आंट्स थे, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स थे, चाहे वो कोई भी था, जिसने भी हमारी वो सब जरूरतें पूरी की, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए that person had to spend money because everything cost money. Even if you had milk to drink, it was paid for. Even if you had gone to school, the school fees, the uniform, the books, everything was paid for. Somebody paid for it, right? So we paid gratitude to all of them अपने कर्जे उतारने के लिए। तो कुछ कर्जे उतरे, नहीं उतरे तो एक बार फिर से कर लीजिएगा, बिकॉज दैट विल गिव यू दैट सेंस कि हाँ हमने हमने बहुत लोगों का शुक्राना करना था और हमने नहीं किया, बट वी हैव डेल्ट विद इट, थोड़ा कुछ कर लिया हमने। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू बिकम अ मनी मैग्नेट। अब कर्जे उतर गए तो अब तो हमें पैसा जोड़ना है, हमने पैसे को अपने पास अट्रैक्ट करना है ताकि हम इन्वेस्ट कर सके या हम अपने वो सब चीजें खरीद सके जो हम चाहते हैं, अपना मनचाहा कर सके, ट्रैवल कर सके, चीजें खरीद सके, बच्चों को दे सके, बच्चों के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सके। सो दैट इज व्हाई वी वांट टू बिकम अ मनी मैग्नेट। So today's chapter is all about gratitude is riches, complaints are poverty. Whenever we are paying gratitude for whatever little we have, we are attracting riches in our life. Law of attraction says what goes around comes around, right? That is one. Secondly, like attracts like. तो जब हम जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देंगे तो ग्रैटिट्यूड विल कम बैक टू अस इन व्हाट फॉर्म, कि ऐसी चीजें और मिले जिसके लिए हम और ग्रैटिट्यूड दे पाए, राइट? तो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाटएवर मनी वी हैव इन द प्रेजेंट। वो हमने पास्ट का किया, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद प्रेजेंट। In present situation, whatever little money or whatever amount of money we have, let's pay gratitude for that and let it grow. Now, why we say gratitude is riches and complaints is poverty? Because we know every time we complain about anything, it goes 10 steps down. We did that, right? हमने रिलेशनशिप के उसमें भी पढ़ा था ये, कि जब भी हम किसी चीज के लिए कंप्लेन करते हैं, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो मनी है, चाहे वो करियर है, any area of your life, wherever there is a complaint, wherever it is, it will go down. It is going to deteriorate. So if we are complaining about money, we are not attracting money. Actually, the money will start going down. And that is why it says poverty. Poverty doesn't mean कि बिल्कुल भिखमंगे हो जाते हैं. But what it says is that the money starts going down. Right? और उसका सबसे important जो the most important reason of complaints is our bills. Do you agree with me? जय कुमार जी, संदीप जी, do you agree with me कि सबसे ज्यादा हमें टेंशन तब होती है जब हमारे पास बिल्स आते हैं टू पे, एंड कहीं ना कहीं वो एक कंसर्न आ जाता है, कभी वरी आ जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है, इतना बिल कैसे आ गया, या सो वी स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट मनी unknowingly.
हमें पता भी नहीं होता, पर हम उसके बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं। एंड इनएडवर्टेंटली हमें पता भी नहीं होता कि हमने उसके लिए कंप्लेन किया, पर जब कंप्लेन करें तो पैसे के मैग्नेट तो बनेंगे नहीं ना। So today we are going to deal with the most important reason why we start complaining. जाने अनजाने में हम कैसे कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं? These are the bills. Do you agree with me, all of you? जब बिल आता है, Yes. yes, जब बिल आता है तो सबसे पहले आता है एक और बिल आ गया. So I also feel it every time I get bills. Yesterday I just saw it in my SMS that बिजली का बिल आ गया and 22nd को पे करना है. I said, oh, एक और बिल. अनजाने में ही हम कहीं ना कहीं इसके बारे में नेगेटिव थॉट ले आते हैं, नेगेटिव फीलिंग ले आते हैं या वरिड हो जाते हैं. आई अंडरस्टैंड इफ समबडी डजंट हैव मनी और उसको अपने बच्चे की फीस पे करनी है तो कंसर्न आएगा, वरी भी आएगा, है ना. वी ऑल हैव some time or the other have felt it कि बिल आया और हमें लग रहा है यार पे कैसे होगा, right? So at that moment how can we be grateful and pay gratitude? थोड़ा डिफिकल्ट लगता है डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वहीं पे तो चाबी है, वहीं पे तो गोल्ड छुपा है, उसको कैसे करना है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू पे फॉर अ रेंट, या आपने मकान खरीदा है, अपना घर खरीदा है और उसके ऊपर आपने होम लोन लिया हुआ है और उसका ईएमआई जाना है. सो एवरी मंथ व्हेन द ईएमआई इज गोइंग या जाना है तो कंसर्न होता है यार ईएमआई जाना है या रेंट देना है. एंड समवेयर ये दिमाग में आता है यार ये हर महीने देना पड़ता है, कब खत्म होगा ये सब झंझट. तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न आ रहा है, वरी आ रही है, एंड दैट इज अ नेगेटिव feeling, negative thought, and negativity will attract what of more negativity and negative circumstances, and you will be surprised, अचानक कहीं और से खर्चा निकल आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा. Suddenly something will come up, किसी की शादी है और आपको जाना पड़ेगा, या किसी का बर्थडे आपको याद नहीं था और you'll have to go and give the gift. Unnecessary, unexpected और खर्चे आ जाएंगे if you are concerned and worried about your bills. And we all have experienced it. Yes or no? किया ना? So this time, whenever you are thinking of paying a rent, just think of the people who have made the house and given it to you to stay in. मुझे याद है when I was growing up, when I was in school, when I was in college, उस जमाने में जो हमारे parents होते थे, they used to make their house only towards the end of their career. जब रिटायर हो रहे होते थे तब वो अपना घर बनाते थे. Isn't it? Everybody have seen at that age making their houses, कि अपना पीएफ का पैसा लेके या कहीं से, तब इतने लोन वोन मिलते नहीं थे. So people used to make their houses towards the end of the career. 50s 60s में जाके अपना घर बनाना शुरू करते थे. And today look at it. A girl or a boy starts a job, 6 महीने के बाद वो अपने होम लोन लेके अपना घर बना लेते हैं, because the loan facility is there, lending institutions are there. So can we be grateful for it that we have that facility now, that we can own a house at younger age? Can we be grateful to the people who have made houses and giving us on rent to stay? सोचो अगर वो घर नहीं बनाते और आपको अपने लिए घर बनाना पड़ता, तब उसमें जाके आप रहते, कितना मुश्किल होता. जब तक नहीं बना पाते तो कहाँ रहते. There are no shelter homes, there are no gurdwaras, there are no dharamshalas, कुछ नहीं बना हुआ. आपको अपने लिए घर खुद बनाना पड़ेगा, तब रहना पड़ेगा. Just imagine life like that. So can we be grateful to the landlord who's created that house for you? उसने मेहनत करके उसको बनाया है so that you can stay in that. You can enjoy the comfort of that house. So when you are paying a rent, be grateful for that facility which is available to you. Similarly, when you buy a house and you have to pay EMI,
Be grateful that you have institutions which are lending you money to buy a house right now. And you are living in this house right now, and but paying it over 15, 20 years. पर रह तो आप अभी से रह रहे हो ना, जैसे पोजीशन मिल गया. Can you be grateful for that? So whenever there is a rent and EMI, look at what are you getting for that money. क्या comfort मिल रहा है? Yeah. Similarly, when the बिजली का bill comes, electricity bill comes, मुझे ना ये बहुत तंग करता था इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिकॉज समर्स में इतना बिल आ जाता था, 8-9 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए, एंड आई यूज्ड टू से इतना बिल क्यों आता है, यू नो. एंड जाने अनजाने में व्हेन यू आर टेलिंग योर चिल्ड्रन लाइट क्यों जला के रखी हुई है, बिजली का बिल कोई और भरेगा क्या, कितनी फजूल खर्ची करते हो. एवरी टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट इट, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी. You're not complaining about electricity, you're talking about money. And when you're talking negative about money, what are you attracting in your life? More such situations to complain about. Every time you are using electricity, be grateful. When the bill comes, the best thing is whenever there's a bill to pay, sit down and just think of what all are you enjoying because of that electricity. I remember those days when we were growing up, इतना पावर कट होता था, गर्मियों में तो इतनी लाइट जाती थी कि पूछो मत, जैसे ही सोने लगते थे रात को लाइट चली गई. गर्मी इतनी होती थी और समझ नहीं आता था सोए कैसे. एंड समर्स में दोपहर को भी लाइट चली जाती थी, बहुत पावर कट्स होते थे. एंड उसके बाद पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इन्वर्टर्स एंड generators. हमने भी खरीदे थे inverters and all. And so grateful to the Tata Power or NDPL, whatever service provider is there in your area. In my area it is Tata Power. There is no power cut at all. मेरा इन्वर्टर पड़ा पड़ा बेकार हो गया because it's not used. Uninterrupted supply of electricity. Can we be grateful for that? That we are not sweating out in summers and we are not feeling cold in winters? What all are we using it for? गीजर चल रहा है आजकल, थोड़े दिन के बाद हीटर चलेगा, और आजकल तो सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एयर प्यूरिफायर चल रहा है घर में. सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है ना. पावर इज बीइंग यूज्ड फॉर दैट, राइट. बिजली, हमारा लैपटॉप, हमारे इंटरनेट, सब कुछ उसी से चल रहा है. हमारा मोबाइल बार बार जब उसको रिचार्ज करने के लिए उसको चार्जिंग पे लगाते हैं, कहीं भी पहुंचो, लाइक दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव सीन एवरीवेयर. एनीवेयर एनीबॉडी कम्स टू योर हाउस, सबसे पहले पूछता है आपके पास ये वाला चार्जर है, मेरा ना फोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया. यू गो टू अ रेस्टोरेंट, पीपल आर लुकिंग फॉर द पावर पॉइंट्स जहां पे जाके वो अपना फोन चार्ज कर लें. We are so dependent on electricity, but when the bill comes, we crib about it. So whenever you're paying for the electricity bill, just be grateful for the facilities and the services you are actually enjoying because of that. हमारे किचन के appliances, हमारा OTG, हमारा माइक्रोवेव, हमारा मिक्सर ग्राइंडर, एवरीथिंग इज वर्किंग. इलेक्ट्रिक केटल हमारे यहाँ तो सारा टाइम ऑन रहती है, वो चाय के लिए या गर्म पानी पीने के लिए. So can we be grateful for all these facilities which we are getting because of the electricity rather than cribbing about the bill? Yeah, we have to be cautious about how we are using it, but worrying about the bill and complaining about the bill is not going to help. The only thing which is going to help is that being grateful for the services we are getting. And just look at it. They are providing you services beforehand. बिल तो बाद में भेजते हैं. आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है उनके नजरों में, सोचो. उनको पता है कि आप पे कर सकते हो. That is why they are providing you with the services first and billing you much later. 1 महीने के बाद आपको बिल दे रहे हैं. Same with the piped gas.
you're using it in the kitchen all the time. पहले वो सिलेंडर मंगाते थे, सबसे पहले तो अंगीठियां जलती थी. I've seen that time also. I've seen अंगीठीज, I have seen stoves, I've seen वो, उसके बाद वो बत्ती वाले stoves आ गए थे. I've seen that also. And then came gas. And gas की बुकिंग होती थी, सिलेंडर आता था, वो सिलेंडर वाला ऊपर चढ़ा के लेके आता था. And you had to book 2 cylinders so that एक खत्म हो जाए तो ये ना हो कि खाना नहीं बने. So एक सिलेंडर रखते थे हम लोग पहले से भरवा के. We have seen all that time. And today we just have to open the knob and the gas starts flowing into your gas stove. So can we be grateful for that at least? The kind of services we are getting? Rather than cribbing about the bills, if we start focusing on कि हमें उससे क्या services मिल रही हैं, हमें उससे क्या goods मिल रहे हैं, then we can be grateful for whatever money we are spending. So this is another way of looking at how to incorporate gratitude in your day-to-day life. Because ये bills हैं जो जाने अनजाने में कहते हैं ना हमारी power खींच के ले जाते हैं. We are very happy, we are being grateful, हर चीज के लिए grateful हो रहे हैं, खाने के लिए हो रहे हैं, कपड़ों के लिए हो रहे हैं. We are being grateful for the air we are breathing and everything we are being grateful. The moment bill comes, कहीं ना कहीं वो दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा आ जाता है, फिर से एक और बिल. So just to not to attract those negative situations more in life, we need to be cautious of it कि जब बिल आता है तो हमने बिल के लिए थैंक यू बोलना है. Right? Now let's think about the telephones. हमारे मोबाइल के बिल्स आते हैं, पोस्ट पेड भी हैं, प्रीपेड भी हैं, है ना, इंटरनेट के बिल्स आते हैं. जब ये बिल्स आते हैं तो हमें बहुत चुभते हैं. जैसे मेरे घर में ही हम 2 जने हैं, फिर भी हमारे 2 बिल तो आते ही है ना, इलेक्ट्रिक के, टेलीफोन के. रिचार्ज भी करना होता है, मेरा एक डोंगल भी है, उसको भी रिचार्ज करना होता है. So when all these things are happening, ना कहीं वो हल्की सी नेगेटिविटी आ जाती है. It's very natural, but we have to work on it, how to be positive and be grateful for it. Now I remember those days when we never had telephones. हमारे ऑफिस में when I started working, we had only one phone, and it was a purchase department. And you can imagine इतने सारे वेंडर से बात करनी है, और वहां पे पूरे डिपार्टमेंट के लोग लाइन लगा के बैठते थे कि इसके बाद मैं कॉल करूंगा. Everybody was allowed to make only one call because everybody's work was critical. और अगर कोई शॉर्टफॉल हो गया किसी चीज का तो उसके लिए हम लाइटनिंग कॉल बुक करते थे, which used to come in 15 minutes. And otherwise अगर किसी और से मतलब इंटरस्टेट बात करनी है तो we had to book trunk calls. Then the operator will come and connect you. It used to be so painful many times. वो connect करने की कोशिश करती थी और फोन नहीं connect होते थे. The other person is not picking up. Yeah, so many times it used to happen. And then I remember MTNL ने निकाला कि you can book a telephone at 1,000 rupees and people started booking it and all. But उसमें भी waiting time बहुत था. आस पड़ोस में जिसके घर पे फोन होता था उसका नंबर दिया जाता था अपने रिश्तेदारों को कि कोई इमरजेंसी हो तो इस नंबर पे फोन कर लेना. एंड देन दे विल कम, आपको बुलाने आते थे और बोलते थे 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद दोबारा कॉल कर लीजिए. एंड देन वी यूज्ड टू गो देयर and then the call used to come again and then we used to talk. This is how it used to be. And once I remember there was a call which came in one of my neighbor's house and she said कि आप आ जाइए बात कर लीजिए. जैसे ही मम्मी नीचे पहुंची बात करने के लिए, she said मेरा फोन आने वाला है, and she disconnected the call. She didn't let mom talk to that person. I was so upset and I booked a Tatkal phone for my residence. At that time, the Tatkal phone costed me 30,000 rupees. 30,000 rupees. And I booked a Tatkal telephone for my house, which I got it in 3 days. एक हफ्ते में लगता था, 3 दिन में मेरे घर में फोन लग गया कि मैं अपनी माँ, अपनी मदर को कभी किसी के घर जाके ये ह्यूमिलिएशन नहीं सहने दूंगी.
So that was the time. And now everybody has a phone in their hands. We used to wait for the letters to come from overseas. 15 दिन में 20 दिन में एक चिट्ठी आती थी. People who used to stay abroad. और अभी क्या है? You just make one call and कुछ buttons दबाओ and you can talk to them. Can we be grateful for it? For the service provider? For giving us that service? But हम क्या कहते हैं? एक तो बिल की कंप्लेन करते हैं, फिर कहेंगे यार ये नेटवर्क बहुत परेशान करता है. कनेक्शन ही नहीं आ रहा, नेट ही नहीं आ रहा, एक ही डंडा आ रहा है, 2 ही डंडे आ रहे हैं. This is what we keep talking about. We are not being grateful that we are able to speak to our loved ones. We are, आजकल तो काम ही सारा phones पे होता है. People are doing business through phones. But we are only complaining and we don't realize the more we complain, the more it is going down, whether it is the service or the money. So today what we are supposed to do is, हमारे पास जितने भी बिल्स हैं, आप दिन में जितनी भी चीजें खरीदते हो या किसी को भी पैसे देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कपड़े प्रेस करे, you paid money to that person, right? Which is like a bill. You paid, you bought vegetables, you pay to the vegetable vendor, which is like a bill, but they don't give you bills. So today onwards, I would suggest, I would recommend that every day before the, before the end of the day, sit down and make your own bills. जैसे मैंने अपने घर में वो used papers होते ना, जितने भी एक साइड यूज किए हुए हैं, उनको काट काट के छोटे छोटे से मैंने वो एक स्क्रिबलिंग पैड सा बना रखा है. एंड आई राइट इट ऑन दैट कि आई, जैसे फॉर द वेजिटेबल गाय, वेजिटेबल वेंडर, उसके बाद नीचे लिखा बॉट दिस मच अमाउंट. या सो यू कैन मेक दोस बिल्स. और उन बिल्स का करना क्या है? सो द बिल्स यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर, आपने जिनकी पेमेंट कर दी है, what you're supposed to do is you're supposed to write, you have to feel thank you for that services you have got. For example, आपकी प्रेस वाली ने आपको कपड़े प्रेस करके ला के दिए, you can just take out and wear it ना. अगर आपको खुद करने पड़ते कपड़े प्रेस तो आपको इतना वो टाइम निकालना पड़ता, आपकी बिजली खर्च होती, आपका एफर्ट लगता. So you're getting that service from that lady or that guy, so be grateful for that and then write thank you paid. उस बिल के ऊपर आपने लिखना है थैंक यू पेड. सिमिलरली आपने अगर मान लो ड्राई क्लीन कराया, ड्राई क्लीन वाले ने आपको बिल दिया, आपने पेमेंट किया, आपने वो बिल के ऊपर लिखना है थैंक यू पेड. तो आपने ऐसे आज 10 बिल्स निकालने हैं जो आपने पहले से पे किए हुए. इट कुड बी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट कुड बी योर वाटर बिल, इट कुड बी योर आपका फोन का बिल हो सकता है, आपका गैस का बिल हो सकता है, आपका बिजली का बिल हो सकता है, सॉरी आपका ये क्या कहते हैं उसको, ड्राई क्लीन का बिल हो सकता है, ग्रोसरी का बिल हो सकता है ना. आपने स्विगी से कुछ मंगाया वो बिल हो सकता है, आपने अमेजन से कुछ मंगाया वो बिल हो सकता है. जो भी बिल्स हैं आपके पास, आपने 10 ऐसे बिल्स लेने हैं जो आपने पे कर दिए, अगर आपके पास हैं तो. नहीं है तो आप अपने आप हैंड बिल्स बना सकते हैं अपने हाथ से. और मान लो अमेजन से आपने कुछ मंगाया, you know how much you paid, right? Or you can go to your Amazon account and see what all your orders you have paid, you have given, and order के आगे आपके पास amount होगा. You can just make those small bills and just write thank you paid. Feeling के साथ लिखना है. It is the feeling which matters. It's a feeling which is a fuel. Yeah. और अगर आप worried भी होते हो feeling के साथ तो वो भी आपका नुकसान करता है. So similarly feeling के साथ आपने लिखना है thank you paid. Usually when I do it, I draw a smiley also. The moment I write, draw a smiley, I also smile. So which is positive, you feel happy about it. Similarly, आपने जो bills अभी pay करने हैं, whether you have the money or you don't have the money to pay for that. For example, मुझे next month अपना एक insurance का premium pay करना है, and I don't have money for that. But I know I have to pay. So what I'm supposed to do is, I will make a bill of that amount and I'll write, thank you for the money. And I've tried this many times in the past. Whenever I write, thank you for the money, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं उस बिल को पे करने के. And if you have
एंड अभी ड्यू डेट नहीं है, आप ड्यू डेट के आसपास पे करना चाहते हो और आपने पे नहीं किया है, तो भी आपने क्या लिखना है उस बिल के ऊपर? थैंक यू फॉर द मनी। एंड जब आप पे कर दोगे देन यू विल राइट थैंक यू पेड। तो देखो आपको डबल फायदा होने वाला है, क्योंकि दोनों बार आपने ग्रेटिट्यूड दिया और दोनों बार आपने एक वो गोल्डन थ्रेड स्टार्ट किया। ग्रेटिट्यूड इज अ गोल्डन थ्रेड। थ्रेड क्या होती है? गोल्डन थ्रेड कैसे है? आपने यहाँ से सर्कल शुरू किया, धागा बांधा, वो धागा घूम के आपके पास वापस आएगा। तो वट एवर मनी यू आर गिविंग इट विद ग्रेटिट्यूड, इट विल कम बैक टू यू मैनी फोल्ड। अगर आपने 100 रुपया किसी को दिया है, अगर आपने मान लो किसी को जैसे अब दिवाली पे लोगों को आपने पैसे दिए होंगे, गिफ्ट दी होगी, जैसे सफाई वाले आते हैं, गार्बेज वाला आता है, या आपकी गाड़ी साफ करने वाला आता है, आप सबको कुछ ना कुछ देते हो ना दिवाली का। तो यू गिव इट विथ लॉट ऑफ थैंक यू एंड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ उसको पैसे दीजिए। जितनी भी फीलिंग्स आप उसमें डालोगे ना, वो फीलिंग्स डिसाइड करेगी कि आपके पास कितना लौट के आएगा। आपने अगर किसी को 50 रुपए भी दिए हैं दिवाली के, और बहुत सारी दुआओं के साथ दिए हैं, बहुत सारी खुशी के साथ दिए हैं ना, बहुत सारी फीलिंग्स के पास साथ दिए हैं, वो आपके पास लौट के तो आएगा, पर कितना आएगा ये डिपेंड करता है द डेप्थ ऑफ योर फीलिंग्स। अगर आपने बहुत, कहते हैं ना, आप इसके घर में भी बहुत खुशियां हो, बेटा खुश रहो, आप दिवाली अच्छे से मनाना, आप बच्चे आपके खुश रहे, आपने मन मन में बहुत सारा उसको दुआएं दी। You never know that 50 rupees can come back to you as 5,000 or maybe 5 lakh rupees. कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, आपको नहीं पता है, बट आएंगे जरूर। What goes around comes around. It is the feelings with which you give that will actually determine के कितना आएगा आपके पास। तो whenever you giving money today and tomorrow, every day, आप जितने भी बनाते हो ना, मैं तो कहूंगी आज से ये रोज शुरू कर दो। आज तो आपने 10 बिल्स पे लिखना ही है जो आप पे कर चुके हो। अभी दिवाली की शॉपिंग की होगी आपने काफी सारी, है ना? मिठाइयाँ खरीदी होंगी, क्रैकर्स खरीदे होंगे, या गिफ्ट्स खरीदे होंगे टू गिव इट टू पीपल, राइट? So you can just take out those bills. Even if you don't have bills, you know how much did you pay. So make your own bills and just write thank you paid. And whatever bills are yet to be paid, कोई आपके bills आने वाले हैं जो भी पे करने हैं, so write thank you for the money. Once you paid, write thank you paid, right? So आज आपने ये करना है कि आपने 10 बिल्स निकालने हैं जो आप पे कर चुके हो, और जितने बिल्स अभी अनपेड हैं जो पे करने वाले हैं, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, कोई भी होगा आपका बिल, आपने उनको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, whether you have the money or you don't have the money to pay for that. है तो भी, नहीं है तो भी, you have to write thank you for the money. और जब पे कर देंगे तो लिखना thank you paid. So this is the exercise you're supposed to do. I remember that I had attended one program जिसमें I think Viken Lakhani का एक कोई प्रोग्राम था, उसमें they had interviewed a lot of millionaires of Japan. There was a guy who interviewed, उनके साथ पूरा उसने एक दिन बिताया एक इंसान के साथ जो वहाँ का richest man था, and he saw that every time he was giving money, he used to take a pause, and every time he was taking money, he was taking a pause and saying something. So he asked him. So he said, I said arigato money, arigato in, arigato out. जब मैं देता हूँ तब भी thank you बोलता हूँ, जब लेता हूँ तब भी thank you बोलता हूँ. So this is to ensure that you get abundance in your life. So every time you are giving money, चाहे आप रिक्शे वाले को दे रहे हो, चाहे आप सब्जी वाले को दे रहे हो, खिंच के मत दो, प्यार से दो, और ऐसे दो जैसे आप अवार्ड दे रहे हो किसी को। होते हैं ना, हम किसी को सर्टिफिकेट देते हैं तो हम दोनों हाथों से देते हैं। I make it a practice now that I give money to even the sabji wala like this, even to the rickshaw wala like this, and I say thank you bhaiya. Yeah, so start practicing that. That will ensure that the abundance keep flowing into your life, right? तो आज आपने 10 बिल्स लिखने हैं जो आपने पे कर दिए हैं। नहीं है बिल्स, अपने बना लीजिए, और अगर आपके पास ऑनलाइन आए हुए हैं तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो अपने ईमेल पे, और सब्जेक्ट पे लिख सकते हो थैंक यू पेड।
So that is another thing you can do. You can forward that mail to yourself, and in the subject write thank you paid or thank you for the money. You can do that, or you can make small bills yourself and write on that. Yeah. So whichever works for you, you can do that. So that is what I wanted to share about today's chapter. You have any questions, you can ask me, because this is a very important chapter, because हम जाने अनजाने में बहुत सारा नेगेटिव बोल जाते हैं, नेगेटिव सोच जाते हैं, वरी करते हैं, एनवी करते हैं। पर हाँ, एनवी के बारे में तो मैंने बोला ही नहीं। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। आप आप एक चीज खरीदना चाहते हो, मान लो आप यू वांट टू बाय न्यू कार, यू वांट टू बाय अ मर्सिडीज, एंड यू बीन थिंकिंग अबाउट इट, माय ड्रीम कार, आई वांट टू बाय इट, एंड इस दिवाली खरीदूं, इस दिवाली पे खरीदूंगा, ये धनतेरस पे खरीदूंगा, बट somehow you have not been able to buy it, and suddenly you saw the similar kind of car standing outside your neighbor's house. उसने खरीद ली, how would you feel? जलन होती है ना? होती है कि नहीं होती है? आई एम श्योर होती है, वो थोड़ी सी तो होती है। यार मैं तो खरीद नहीं पाया, इसने खरीद ली। नाउ अब वो जलन जो है वो क्या पड़ोसी से है? नहीं। जब तक कार थी तब तक तो पड़ोसी से कोई जलन नहीं थी। जब कार नहीं आई थी तब तो वो पड़ोसी पड़ोसी था, अच्छा था, इट वाज ओके, जैसा भी रिश्ता था उसके साथ ठीक था। बट व्हेन द कार केम, you felt that jealousy or envious. तो जलन पड़ोसी से है या गाड़ी से है? किससे है? बोलो भाई, किससे है जलन? गाड़ी से हुई ना? गाड़ी means what? Money. So indirectly you are feeling negative thoughts about money. So do you think you are attracting that car into your life? You are actually pushing it away. जितना टाइम लगने वाला था उससे ज्यादा टाइम लगेगा उस गाड़ी को आने में, बिकॉज अनजाने में you have felt negative thoughts about that, and we do this all the time. उसने कितनी अच्छी साड़ी पहनी, कितनी भारी है, होगी कम से कम 25-30 हजार रुपए। पता नहीं लोगों के पास इतना पैसा कैसे, तो इतनी महंगी महंगी साड़ियां कैसे खरीद लेती हैं। So did you say anything about the sari or about that lady? No, it's about money. You're complaining about money. इसी तरह से हमें नहीं पता हम कितनी बार मनी के बारे में कंप्लेंट्स कर जाते हैं, एनवियस हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू सेंड योर चाइल्ड फॉर फर्दर स्टडीज अब्रॉड, चिंता हो रही है, यार पैसा कहाँ से आएगा, जहाँ भेजना तो है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो यू वरीड अबाउट इट ऑल द टाइम। एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कैसे करूंगा, बस परेशान हो रहे हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एक्चुअली गिविंग नेगेटिव फीलिंग्स एंड थॉट्स टू मनी। सो बी वेरी केयरफुल। इसीलिए सबसे आसान तरीका है, जितनी बार भी पैसा खर्चो थैंक यू बोलो, जितनी बार भी पैसे कोई बिल पे करो थैंक यू बोलो। तो ग्रेटिट्यूड की जब आदत पड़ जाएगी तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक ही जगह रह नहीं सकते ना, तो यू विल बी पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो नेगेटिविटी धीरे 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 मनी को लेकर क्या लाइफ में ही कम होती चली जाएगी। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस बुक। व्हाई आर वी डूइंग इट? We want to fill our life with positivity, with gratitude, so that we attract whatever we want in our life. जिस तरह की जिंदगी हम जीना चाहते हैं, जितनी भी बची है, हम वैसी जिंदगी जी पाए। And that is the reason we are doing this session, right? So आज से I would recommend that आप जो भी पैसे खर्चते हो पूरे दिन में, शाम को एक बार बैठकर छोटे छोटे अपने जो राइटिंग पैड, जो अपने स्क्रिबलिंग बनाओगे, उसके ऊपर एक एक बिल बनाते चले जाओ और उसके ऊपर थैंक यू पेड लिखते चले जाओ। एंड ऑफ द डे यू विल फील so full of gratitude that you had so much money to spend today.
And every time you're giving money to anybody, आप अपनी मेड को दे रहे हो, खिंच के मत देना. जैसे खिंच के दोगे पैसा, आपको पास भी खिंच के ही आएगा. इजीली नहीं आएगा, effortlessly नहीं आएगा. Anytime you're giving money, whether you're paying for something or you're donating, अगर आप किसी को भीख भी दे रहे हो किसी को, तो खिंच के नहीं देना, ये ले, ऐसे नहीं करना है. With lots of blessings, lots of good feelings, give it to that person. And you will be surprised how money will start pouring in. So this is about today's chapter. And I hope I've been able to add some value to you guys. In case you have any question, please don't hesitate, because it's a very important chapter today. किसी को कुछ भी question हो, please ask. Yeah, I have no questions, but I just want to acknowledge you and thank you from bottom of my heart. I mean, it's Thank you opened so up much. so much, and maybe it's about 40, 45 minutes given me so much of power. Because I already do this, but I used to tell my wife or son who talks that नहीं हुआ, ये नहीं है, वो नहीं है. मैं कहा आएंगे बोलो, आने वाले हैं, इसके लिए शुक्राना करो. So, but now I feel that instead of that is also a part of complaint against them. Yes. So instead, I want to get to a next level that not complain them, slowly add my own acknowledgement for maybe my son, whatever he is doing for me, or my wife who has been so committed to the family. Yes. So that's what I got, and it moved me a lot. I just saw that this thing in the group, like today, it's going to be about money magnet, and I'm going through like a lot of depth, but moving ahead very well. I mean, God has been kind. कि धीरे धीरे उसको अच्छी तरीके से ले आऊं. तो वो देखते ही then I thought I will just switch on to this. तो उसके अंदर I got a too much of like power. I got. Thank you so much. Thank you so much. And thank you so much for sharing, that you're going through whatever you're going through. So, and I would request, I'm request to share the video so that I can send it to a lot of people whom I know, and they'll get benefited out of that. Yeah. So since you mentioned about debt, I just would like to say something here. So whatever debt you have to pay for, that money, whoever gave it to you, you have, I would suggest that you start writing gratitude for them. And whatever money you have used for, like you definitely took money to, किसी चीज को satisfy करने के लिए लिया होगा ना, कुछ खरीदने के लिए, या business में लगाने के लिए. So be grateful for that also. So I just would request that you start writing gratitude for those people who lended you money because they trusted you. Yeah. Correct. And whatever you have used that money for. Yeah? Correct. So be grateful for that also. So I would suggest that you start writing gratitude for all that, and you would be surprised how things will start opening up. Yeah, thank you. But again, one more thing I want to share is that I was sitting and listening. I do some little multitasking because I was cleaning the cupboard also by the time along with it, but I was fully hearing you also. But uske andar I got the book of my younger daughter has kept it, 100 Days My Gratitude Journal. On first page is about Eckhart Tolle saying acknowledging the good that you already have in your life is foundation for all abundance. That is true. Whatever you have is the foundation. Yeah. Yeah. So already I started listening to you and I got the book also, diary also. This year, so I'm going to write down. Thank you so much. Yeah. And one more thing I would like to say is that stop thinking about debt. Okay. So the more you talk about debt, the more you think about debt, you are attracting debt into your life. Right. Yeah. So always think and talk about abundance. Yeah. Right. So whatever amount you want to pay for, just write that amount and start writing gratitude for that amount. Okay. Yeah, write it rather than writing debt, that I want money to pay debt. Yeah, just write, I want this much money to gift
that person, जिसको भी देना है, बैंक को Right. देना है, किसी को देना है, to gift that Right. this much amount to this person. Thank you for this much amount to be, gifted to this person. Just start writing like that. And the Okay. more you will write about it, the more you will attract abundance. The more you talked about debt, the more you are attracting debt. You will not be able to come out of it. Got it. Got it. Yeah. So Yeah. the more effort you're putting into clearing debt, start putting that effort for creating abundance. Right. Yeah. Fine. So Got when it. you're writing journal, also write about the abundance. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. You're welcome. Anybody else has any question? Shabana, would you like to take on? Yeah, thank you, Jagjit, for such a wonderful session. So there are so many opportunities every day we miss on thanking on all of them. So thank you for giving us these practices. I think that will be really helpful. I think Rajvin wants to say something. Rajvin, do you? Yeah. Yeah. I noticed that money is not money is a necessity, but money is not everything. So Yeah. I'm just taking one by one and creating abundance in my life. So especially during this Diwali, I hope for abundance after the 20th of November. Yeah. So thank you for this positivity. Thank you so much, Rajvin. Thank you so much. And I've been doing counting your blessings exercise. yes, it really helps. Thank you. yeah, I was just coming to the assignment part of it now. So the assignment for today or this week, whatever, like since we are doing it once a week. So the assignment for today's session is that you have to start with your, count your blessings, 10 blessings every day. I hope you all are doing it. If you're not doing it, you can start it from today, no problems. So you can start it from today. And if you're not doing it, and how you're supposed to do it, you have to think about 10 good things which are there in your life you can be grateful for, and write why are you being grateful. And after writing it 10 of them, go back to the first one, read it, feel it, and say thank you, thank you, thank you 3 times for each one of them. So that is your assignment number 1. So number 2 is that you have to look for 10 bills जो आप पे कर चुके हो, you already paid. Just take out 10 bills and write thank you paid. If you have physical bills, very good. If you don't have physical bills, it is online bills, then you can forward it to your email ID and write thank you paid on the subject matter. Or the third thing is you can make small bills yourself. उसके ऊपर लिख दो किसको पे किया, कौन सी डेट को किया, how much is the amount, and write thank you paid. And the third thing is you have to take out the bills which are yet to be paid. एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं. The bills you have yet to pay, take out those bills and write thank you for the money. Yeah, and whether you have the money or you don't have the money, पे करना है, पैसे हैं या नहीं हैं, क्यों नहीं पे किया, maybe you're waiting for the due date, or maybe you don't have the money. Whatever the reason is, you have to take out the bill and write thank you for the money. And once you pay it, you know what to do. Thank you paid, right? And Jai Kumarji, I would tell you to also do that. For the debt also, you can create that kind of a bill and write thank you for the money. Yeah, it just came to me. I thought I'll just share. I have already made the written down, but on the above I have a lot of space, so I started writing when you were hearing you. Thank you for the money. Thank you. So I will Yes. make a different page also. That is giving me more power. Wonderful, wonderful. So that is your assignment number 2 and 3. And number 4, of course, your magic rock. Magic rock, आप सबको याद ही होगा, एक छोटा सा pebble जो आप अपने bedside पे रखते हैं, so that before going to bed, you hold it in your hand, go through the entire day and think about all the good things that have happened during the day. और सबसे अच्छी चीज के लिए thank you बोल के उस
पत्थर को आपने साइड में रखना है और सो जाना है. That is the last thing you should do just before hitting the bed, right? So that is your assignment for today, and you can do it over the next 1 week. जब तक हम next time मिलते हैं. And ये जो bills वाला मैंने बताया है, if you can do it every day, आप 2 bill 3 bill जितने भी लोगों को पैसे रोज दे रहे हो, आप रिक्शे वाले को दे रहे हो, आप सब्जी वाले को दे रहे हो, आप प्रेस वाले को दे रहे हो, आप किसी को वैसे दे रहे हो, दिवाली का दे दिया, भाई दूज का दे दिया, या आपने किसी के लिए गिफ्ट खरीदा, तो आप उन सबके बिल्स रोज के रोज बना सकते हैं. एंड एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड, इफ शाम को बैठ कर आप बनाते हो और उसको बहुत सारा फीलिंग्स देके, थैंक यू देके अगर आप उसको बनाते हो, you will see things changing, drastically in your life as far as money is concerned. I have done it. That's why I could say about it. Yeah? So thank you very much. And it's just a pleasure being with you, all of you, every week. Thank you so much, Shavana. Thank you, Mevin, for giving me this opportunity. And I will see you next week. And I will share the assignment in the group, and would urge all of you to start doing these practices so that हम अपनी मनचाही जिंदगी जी